हाय गाइस, वेलकम टू ओपीएससी वाला फिजिक्स वाला। केमती अच्छा समस्ते? आपण माने समस्ते भले अछंती? हाय गाइस, वेलकम टू ओपीएससी वाला फिजिक्स वाला। केमती अच्छा समस्ते? आपण माने समस्ते भले अछंती? कैलाश, गुड आफ्टरनून। अभिजीत केमती अच्छा? बहुत बढ़िया। आपण माने केमती अछंती? समस्त पढ़ा केमती कोन चलची? ये कि क्लास सबू पिला जे भी कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर कर काम रे आसीबो, बट ओडिशा सिविल सर्विस स्पेसिफिक ही मु पढ़ाए। ओके, विल स्टार्ट। सो मु वेट करथली किछि पिला को आसी जातु। सो ये एक्सक्लूसिव बैचेस ओपीएससी वाला रे, वेरी माइन्यूट बैचेस। post-Mauryan phases, okay, post-Mauryan phases। ये सभी मॉडर्न हिस्ट्री अनुभाग बैच रे तो मु पढ़े देछि। अनुभाग 2.0 रे मु पढ़े नै, सेटा आगो को स्टार्ट हबो, आगो को हबो अनुभाग 2.0। सो मौर्यन एज आमे देखी थिले। थ्री 24 या 22 केते कौन को जाएगा टू 186 BC। अभी एनसीएंट नहीं, एनसीएंट पढ़ाई नहीं, एनसीएंट नो सिलेबस नहीं। एस रो सिलेबस जो देखिबो पूर्व जो सिलेबस थिला लास्ट ईयर रो सिलेबस, एई वर्ष रो नोटिफिकेशन आसी नहीं, पूर्व सिलेबस अकॉर्डिंगली तो नथिला। मो यूट्यूब रे तो नेबी एंशिएंट और मेडिएवल क्लास नेबी यूट्यूब रे, बट पेड बैचेस रे सिलेबस नाही अनु एसो पई ओडिशा सिविल सर्विस पई तो नउची पूरा फुल फ्लेजेड नै छी क्लासेस। लास्ट क्लास रे हमें देखी थिले मौर्यन एज। तांको परे हमें देखियो पोस्ट मौर्यन। पोस्ट मौर्यन मौर्यन एज रे हमें देखी थिले चाहे चंद्रगुप्ता मौर्य, बिंदुसार, अशोका,
बृहद्रथ लास्ट रूलर अशोकन एडिक्ट्स लार्जेस्ट एम्पायर टिल नाउ समस्ते तुम सांगसाथी सहित शेयर कर वीडियोटा को लाइक कर जरूर गोटे लाइक कर ये वीडियोटा समस्त पाखे जाई पहुँचू सो टॉपिक्स आम आज देखा पोस्ट मौर्यन पोस्ट मौर्यन फेजेस 185 BC रु 300 AD ये फेजेस को पोस्ट मौर्यन ए एजेस रे नॉर्मली बड़ रूलर सेमती पान इंडिया रूल करवा आफ्टर मौर्य पर कई सेमती नथिले बट पोस्ट मौर्यन रे मौर्यन डायनेस्टी डिक्लाइन होतला ताकू मारिले स्टार्ट हला सुंगा डायनेस्टी कानवा डायनेस्टी सातवाहना डायनेस्टी then Indo-Greeks Sakas Kushanas अंशुमान गुड आफ्टरनून केमती अच्छा समस्ते बैकग्राउंड देखिए ओके मु कहली कि मौर्यन पीरियड परे भल से बुझ से भाया ऑल इंडिया लेवल रे मौर्यन एम्पायर पर से भाया ऑल इंडिया लेवल को रूलर नथिले जे कि मौर्यन एम्पायर रे कश्मीर टू पूरा एक्सट्रीम साउथ एपटे आसाम सेपटे ईरान अफगानिस्तान ये सब एरिया आम कंट्रोल थिला कश्मीर पर्यंत नॉर्थ रे हिमालय रीजन ये सब एरिया अशोका अंडर थिला टिल नाउ सब लार्जेस्ट एरिया तो ये पीरियड रे इन्वेजन तो होउतला बाहरु बट इन्वेजन निजे स्टार्ट कला किए पुष्यमित्र सुंगा फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी ये भी छोटिया छोटिया रूलर ये माने पूरा बहुत बड़ा रूलर नथिले सुंगा कानबा सातवाहनास फॉरेनर इंडो ग्रीक्स जे कि बैक्ट्रियन को जायथिला साका द पार्थियंस एंड द कुशानास नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ये ला मेजर दीज आर मेजर रूलर थिले ई समय या प्रकार डाउट अछि किछि नमस्कार सुदाम देखा नथिला
सो आम इनफॉरमेशन कुआड़ पाइलु यही समय पोस्ट मौर्यन समय इनफॉरमेशन करू इनस्क्रिप्शन वेरी इंपोर्टेंट ला कॉइन बहुत सारा कॉइन प्रथम थर पे पोस्ट मौर्यन पीरियड रे मिलिथिला से रूलर रो ना थिला क्रोनोलॉजी पाई गलु एंड लिटरेरी टेक्स्ट भी मध्य इनफॉरमेशन देथिला इनस्क्रिप्शन और लिटरेरी सोर्सेस जमिति लिटरेरी सोर्सेस लिटरेचर से समय आम पुराण धर्मशास्त्र मनुस्मृति ये बहुत बड़ा रोल प्ले करथिला also known as मानव धर्म शास्त्र is composed by sage Manu and is first detailed law book available. क्लास डेली बा गोटे बेले होची एवरीडे 1 PM मंडे टू सैटरडे ए वीक मोर सरीगला नेक्स्ट वीक हबनी पुनी नेक्स्ट वीक हबो एई टाइम टा गोटे रु 2टा मंडे टू सैटरडे डेली रहउनी की क्लास प्रिपरेशन केमती कौन चलती समस्त पढ़ा रिलेटेड किसी डाउट अच्छी तुम यू कैन आस्क मी गार्गी संहिता एंड महाभाष्य ऑफ पतंजलि गार्गी संहिता एंड महाभाष्य ऑफ पतंजलि व्हिच कमेंट्री ऑन द पाणिनीज अष्टाध्यायी मनुस्मृति को लॉ बुक कह जाए देन आउ कौन कौन पाइले इनफॉरमेशन लिटरेरी टेक्स्ट भी बहुत सारा इनफॉरमेशन आम पाइचु पुराण धर्मशास्त्र मनुस्मृति गार्गी संहिता महाभाष्य देन बुद्धिस्ट जातक दिव्य वंदना महावास्तु मिलिंद पान संस्कृत एंड मिलिंद प्रश्न मालविका अग्निमित्र ऑफ कालिदास एंड हर्ष चरित्र ऑफ बाणभट्टा दीज आर सब लिटरेचर मिलिंद पान माने मिलिंद माने मनिंदर मनिंदर नागार्जुन मित्र जो टॉक होता मालविका अग्निमित्र कालिदास लिखी मालविका आ कालिदास भितर जो लव स्टोरी अग्निमित्र है सुंगा डायनेस्टी रूलर अग्निमित्र जने रूलर थिले सुंगा डायनेस्टी एंड मालविका लव स्टोरी थिला हर्ष चरित्र लिखी बाणभट्टा बाणभट्टा कोर्ट पोएट थिले कोर्ट पोएट हर्षवर्धन कोर्ट पोएट देन पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी रिटन बाय गोटे एनोनिमस ग्रीक रो सी फेरर ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड वेस्टर्न वर्ल्ड केमती चलथिला ता उपरे पाई परिबो आल्सो the epigraphy record in Kharosthi found large number of Gandhara and Central Asia ये सब जिनस आम इनफॉरमेशन पाई आम देखिए आई समय
यस राइट। ये देखो सुंगा एम्पायर केते छोट हो जस्ट आफ्टर मौर्यन एम्पायर। ये सातवाहन एम्पायर यही जगह कान्वा परे आसीबो। देन तुमरो ग्रीको बैक्ट्रियन किंगडम इंडो ग्रीक्स अलेक्जेंडर इंडिया को अटैक करथिला। सुंगास 187 BC रू 78 BC कैपिटल एट पाटलिपुत्र एंड ए सेकेंड कैपिटल एट बिदसा अंडर द सन अग्निमित्र वाइस रहता से सुंगा डायनेस्टी। बिदसा सेकेंड कैपिटल थिला जो अग्निमित्र आसीबे ए मालविका अग्निमित्र कौन नथिली तांको परे पुष्यमित्र सुंगा डिफेंडेड द कंट्री दैट आम एरिया देखले सुंगा डायनेस्टी एरिया देखले एटा आफ्टर मौर्यन एम्पायर सुंगा एम्पायर है। पुष्यमित्र सुंगार तांकर फाउंडर थिले तांको पुओ थिले अग्निमित्र। सो इंडिया कल्चर इंडिया कंट्री को डिफेंड करते फॉरेन इन्वेजन रू खास करके ग्रीक इन्वेजन रू ये प्रोटेक्ट कर रखते। बेरूत रे स्तूपा ये एरिया करते सुंगा। आफ्टर पुष्यमित्र तांकर पुओ अग्निमित्र आसिले। कालिदास ले मालविका अग्निमित्र में डिस्कशन करते लॉस्ट योर किंग अग्निमित्र एंड हैंडमेडन मालविका। हैंडमेडन माने कौन anyone मेड है ना। The significant attempt at penetrating into India by Demetrius I यही समय पेनिट्रेट करते डेमेट्रियस I और बैक्ट्रिया किंग। बैक्ट्रिया देखिबो एठी बैक्ट्रिया किंग एई पाखा ये से समय अटेम्प्ट करते इन्वेजन पाई वाज काउंटर्ड सक्सेसफुली बाय वासुमित्र अग्निमित्र पुओ सी भी काउंटर करते भल से। बुझेला देख अश्वमेध सैक्रिफाइसेस हेतला he performed अश्वमेध sacrifices for revival of Brahminical order and patronized scholars like Patanjali and Manu। एबे बुझिगला अंशुमान अश्वमेध सैक्रिफाइस करथिले अग्निमित्र करथिले और अग्निमित्र परे तांको पुओ वासुमित्र आसिले तापर 7 मोर किंग आसिले ऑफ सेम डायनेस्टी। सुंगा एम्पायर जो रीजन थी वो बिहार
Bengal, UP and northern Madhya Pradesh. Bihar, Bengal, UP and northern Madhya Pradesh. The last ruler of Sunga dynasty was Devabhuti and he was killed by Vasudeva Kanva. से कानवा डायनेस्टी स्टार्ट कले which ruled in the eastern and central India. Kanva dynasty, have you heard about it? So सुनिचो देखो ये सुंगा डायनेस्टी एरिया मैं पर पिक्चर बनले तुम भल नॉर्मली ये मौर्यन पर आसते तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एम नहीं थे सुंगा गोल्ड हो सिल्वर कॉइन इश्यू करथिले ये गोल्ड और सिल्वर कॉइन यूज करथिले जोटा इनहेरिट करी आनिथिले जोने मौर्यन स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पैट्रोनाइज करथिले ब्राह्मणिकल ऑर्डर को सेवन नॉट अगेंस्ट द बुद्धिज्म नथिले आर्ट एंड लिटरेचर बहुत पैट्रोनाइज मिलिथिले एई समय मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट मथुरा रा कोनी जानि छ नहीं दिल्ली पाखरे achieved new heights especially in realistic human depiction accessory like gateway stone railing or added to the number it यवन राज्य inscription धनदेवा अयोध्या inscription mention about Sunga मानु मानव धर्मशास्त्र और मनुस्मृति और and Kalidasa's Marvi are said to have been composed during this period and Pushymitra Sunga erected Berut Stupa. कानबा आसला छेदी आमर ओडिशा रे वासुदेव कानबा जेमिति पुष्यमित्र सुंगा लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी बृहद्रथ को मारिथिला सेम लास्ट रूलर ऑफ सुंगा डायनेस्टी देवभूति को मारिला किए वासुदेव कानबा एमिति हुए बदला लेके रहेंगे कानबा डायनेस्टी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए सो वासुदेव कानबा किल्ड हिज किंग देवभूति एंड कानबा डायनेस्टी स्टार्ट कला विदिशा और पाटलिपुत्र तार देटा कैपिटल थिला मात्र 26 वर्ष शासन करिसेंती कानबा वासुदेव killed by Satavahana, Andhra king and Kanva dynasty. The Brahmins ended with him. Around 1st century BC, the kingdom of Chedis or Chetis was founded in Kalinga. The politics of this period is known for 3rd Chedi king of Kalinga, known as 𝐒𝐂. Hathingumpa inscription of Udayagiri hills of Odisha. हाथीगुम्फा इनस्क्रिप्शन जानी आमर यही भुवनेश्वर पाखे ओडिशा हिस्ट्री पढ़ले आम पढ़ा
ग्रेट कंकरर जी कि मगध कंकर करते सातवाहना पांड्या सब मदुराई खारबल was a Jaina follower who donated cave to Jaina monks in Udayagiri hills से जैन monks ପାଇଁ ହିଁ ଉଦୟଗିରି ଖଣ୍ଡଗିରି କେବ୍ ବନିଥିଲେ। ବୁଝି ହେଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ଇଣ୍ଡୋଗ୍ରୀକ ଏଇଠି ଆସିଗଲେଣି ସାତବାହନା ये सरला सुंगा एंड कानवा सरला सुंगा कानवा पर किए अछि सुंगा कानवा पर किए अछि सातवाहना सातवाहना रो कैपिटल कोन थिला के कहबो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सातवाहना एनीवन व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सातवाहना सातवाहना रो कैपिटल कोन थिला के कहबो एनीवन व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सातवाहना किए कहि परियो कैपिटल अमरावती अमरावती जानिछ प्रेजेंट कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश it is because of the its हिस्ट्रिकल सिग्निफिकेंस इंटेंशनली आंध्र प्रदेश रो कैपिटल बना गला कोन अमरावती सिमुका यांकर फाउंडर थिले एठू ना आंध्र आसी आंध्र प्रदेश तांकर कैपिटल प्रतिष्ठान थिला मॉडर्न पाइथन महाराष्ट्र एंड ऑन द गोदावरी रिवर एंड सेकंड कैपिटल थिला अमरावती Information about history of Satavahana are obtained from Aitareya Brahmana, Purana and epics, Birat Katha and Gundaya, Kamasutra, Vatsayana. ये सबुरु इनफॉरमेशन आमे पाइथिले पुराण एपिक्स बृहत कथा ऑफ गोनाड्य कामसूत्र लिखिथिले वत्सायन ये सबुथु इनफॉरमेशन पाइचे नानाघाट इंस्क्रिप्शन दिस इज वेरी इंपोर्टेंट नानाघाट इंस्क्रिप्शन ऑफ नासिक ये हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारबेल नाम हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन ओडिसा रे एंड एरागुडी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द सुंगा The Satavahana grave are reported to be encircled by big pieces of stone and therefore they are called megalithic people. Gujarat and Malwa were conquered as a per the Nasik inscription Nani 𝐼𝐚𝐴𝐻𝐿 his wife. प्रतिष्ठान एटा हला प्रतिष्ठान ये प्रतिष्ठान ये हला महाराष्ट्र प्रेजेंटली दिस इज अमरावती
आंध्र प्रदेश रो कैपिटल समय केमिति परिवर्तन हुए जेमिति तुमर वर्तमान समय भावुच तुम्हें सिलेक्शन हेनी तुमर सिलेक्शन हो जिवो समय भल समय तुमर भी आसीबो नेक्स्ट important king was Gautamiputra Satkarni and the most important ruler thile Gautamiputra Satkarni, also known as Eka Brahma, defeated Sakas, Greeks, Parthians, and Nahapana, Western Satrap. Around 150 CE, Rudradaman took advantage of weak successor of Gautamiputra Satkarni and defeated them. At the end of 2nd century BC, another important ruler, Yagnashut Alakarni, came to throne or conquered back to the area of Gujarat and Malwa, Andhra Pradesh. यांको परठू डिक्लाइन होबाकू लागिला जोंडे एई जगह वाकाटका रूल शासन चलाला वाकाटका सेम रीजन रे एई रीजन रे वाकाटका रूल करिया स्टार्ट कले जे कि एरिया थिले वाकाटका एरिया रूल करिया स्टार्ट कले एडमिनिस्ट्रेशन जो देखिबा यांकर मोर और लेस नेम अलगा बाकी मौर्यन सहित एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट एंड कल्चर इकोनॉमी ये सब थिला देन देखियो इंडो ग्रीक्स माने कोन ग्रीक पीपल सेटल्ड हेले इंडिया रे आसीगी हम धीरे धीरे ओवर द टाइम ये लोकलाइज्ड हे गला परे तांको इंडो ग्रीक्स कोआ गला इंडिया रे तीनटा ब्रांच थिला वेरी इंपोर्टेंट रे मन रखिबो वेरी वेरी इंपोर्टेंट तीनटा ब्रांच कोन कोन ओडला बैक्ट्रिया नॉर्थ अफगानिस्तान पाइबो तक्षशिला एंड सकल और सियालकोट नाउ इन पाकिस्तान ये तीनटा ओडला बैक्ट्रिया अफगानिस्तान नॉर्थ देखियो बैक्ट्रिया जदि देखियो ये बैक्ट्रिया नॉर्थ अफगानिस्तान सियालकोट एटी पाखरे पाइबो सकल और सियालकोट नाउ पाकिस्तान एंड तक्षशिला जे देखियो एटा ऊपर एटा तक्षशिला तीनटा ब्रांच यार सियालकोट आउट टिके तळको आसीयो पंजाब एरिया हेलियोडोरस ये तक्षशिला ब्रांच ऑफ रो किंग एम्बेसडर थिले ये सेंट टू कोर्ट ऑफ किंग ऑफ विदिशा हेलियोडोरस गॉट स्टोन पिलर कंस्ट्रक्टेड इन ग्रीक स्टाइल different from Ashokan style which was dedicated to Lord Vasudeva. Demetrius and Maninder or Milinda were two significant rulers mentioned from Sakala or Sialkot branch of Indo-Greeks. Maninder or Milinda 165 to 145 BC adopted Buddhism under Nagasen who wrote Milindapana in Sanskrit. This book is a great source of history of this age.
मिलिंद पान बेसिकली मलिंदर और मनिंदर आउ नागार्जुन भितरे बेसिकली जो टॉक होता तारी उपरे ए मिलिंद जोटा कि सियालकोट ब्रांच ऑफ इंडो ग्रीक्स थिले मनिंदर या मिलिंद जे कि बुद्धिजीवी मैडम करथिले नागसेन से लिखी थिले बहुत बड़ हिस्ट्री यही समय थिला तुमरो देखो इंडो ग्रीक किंगडम धीरे धीरे इंडिया को माने रूल करिया लखिले एवं वेरी इंपोर्टेंट है इंडो ग्रीक्स were the first to issue gold coin bearing inscription of images of kings and gods India learned use of curtain yavan from Greeks. Greek term horoscope was derived from the term horashastra. They introduced the practice of governorship. धीरे धीरे इंडियनाइज हो गला से आसिले बट इंडिया रे मिसी गले से समय मेटालर्जी हो मेडिसिन कॉइन रो जो स्टोन सॉरी गोल्ड कॉइन बनेबा एवं ताकू प्रथम से माने इश्यू करथिले गोल्ड कॉइन फर्स्ट बुद्धिस्ट आ हिंदू को भी से माने पैट्रोनाइज करथिले यांक सबरे सबुटु बड़ इंपोर्टेंट हला गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट आमे सुंगा डायनेस्टी समय देखिथिले मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट रो डेवलप हेतला यांको एमाने भी आसिकी इंडो ग्रीक्स माने मथुरा को भी कुशाना खास करके मथुरा को और भल से डेवलप करले बट गांधारा स्कूल को इंडो ग्रीक्स माने फुल फ्लेज डेवलप करथिले एवं ग्रीक रो आर्किटेक्चर इथरे इंट्रोड्यूस करथिले रोमन आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस करथिले गांधारा स्कूल इंडो ग्रीक्स माने फुल फ्लेज डेवलप करथिले एवं ग्रीक रो आर्किटेक्चर इथरे इंट्रोड्यूस करथिले रोमन आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस तक्षशिला पेशावर बैक्ट्रिया बेमियान हड्डा in Afghanistan Bagram Kashmir are an important site of development of this school. Muscular body, beard and mustache are seen in the image of Buddha and Bodhisattva. Image of Greeks god and kings too are reported. Use of grey sandstone, outer roof, Roman influence, facial images and andromorphic, that is human form, god, Greek influence is evident in the Gandhara school of art. देखो इंडिया रो तीनटा स्कूल ऑफ आर्ट बहुत फेमस थिला गोटेला मथुरा स्कूल आ गोटेला गांधारा स्कूल आ गोटेला अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जोंडे की ड्यूरिंग सातवाहना से पोस्ट मौर्यन एज रो एवं ई पोस्ट मौर्यन एज तीनटा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर बहुत डेवलप होईछि एवं एई समय रे सातवाहना स्कूल अमरावती स्कूल जोंडे नागार्जुन स्कूल भी कहा जाए एंड देन मथुरा स्कूल सुंगा डायनेस्टी समय डेवलप होईतिला देन कुशाना समय रो बेसिकली फ्लोरिश होईतिला एंड इंडो ग्रीक स्कूल जे कि गांधारा स्कूल कहा जाए सेटा डेवलप होईतिला ड्यूरिंग इंडो ग्रीक्स मथुरा स्कूल सुंगा डायनेस्टी समय डेवलप होईतिला देन कुशाना बुझियला सो आमे देखी थिले ये सब सियालकोट ब्रांच तक्षशिला एंड सियालकोट इंडो ग्रीक्स सो ये जो गांधारा आर्ट को हेलेनिस्टिक आर्ट भी मध्य कहा जाए फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन ये सब देखिले डेमेट्रियस वाज अ सन ऑफ ग्रीको बैक्ट्रियन किंग यूथिडेमस वन एंड इन्वेड अफगानिस्तान और पंजाब को इन्वेड करथिले from Takshila Roigi. He sent two of his commander Apollodotus and Maninder for further conquest.
Epaphroditus conquered Sindh and marched up to Ujjain, and Manindar extended his rule up to Mathura, and from there he attempted to capture Patliputra, but he was stopped by the army of Vasumitra, the grandson of Pushyamitra Sunga. Manindar basically asiki rule kala ye ethi या मिलिंद कैपिटल सियालकोट ब्रांच रो नॉर्थ वेस्ट इंडिया रो he is said to have raided the Gangatic region along with kings of Panchal and Mathura. Religion basically Buddhism को convert होइतिला by the नागसेन नागार्जुन को जाय नागसेन आउ यांको भितर जो डिस्कशन होउतला मिलिंद वर्सेस नागसेन और नागार्जुन यहाँ के भीतर जो डिस्कशन होता रिलीजियस रिलेटेड टू बुद्धिज्म तापर से कन्वर्ट हेले से डिस्कशन को गोटे बुक्स कह जाए मिलिंद पान His coin have been found all over the extensive area ranging from valley of Kabul and Indus river to so far as western Uttar Pradesh. He is described as the king and sorter, the savior in his coins. Related literature कौन ना मिलिंद पान written by नागसेन जोटा कि नागसेन लिखित मूल्य क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन बुद्धिज्म विथ टीचर्स नागसेन नागसेन भीतर डिस्कशन होतला एवं नागसेन इथर कन्विंस करिकि तांको कन्वर्ट करेले बुद्धिज्म को तो इठु या पर डिक्लाइन होला क्लाइन NTLC dash 95 BC रे MSA Heliodorus sent his emissary Heliodorus to the court of King Bhagabhadra and erected the pillar of Garuda Dhwaja with capital adorned by figure Garuda in honor of the god Krishna Vasudeva. This is also known as Heliodorus pillar or base Nagar period. Yavanar invasion of Yehuda Yudhar socket भी कहा जाए further east into the Magadha territory, the cessation of land to Sunga, loss of Bactria to Parthians and Saka ये धीरे धीरे खत्म हो गया. Then Parthian and Pahalavas capital है तक्षशिला. ये सुनिचो पार्थियान ना सुनिचो ये भी बेसिक किसी important नुए important information है ला किसी inscription वो हमें पाइचु तख्ती बाही इंस्क्रिप्शन सेंट थॉमस इंडिया को यांक समय आसते एंड दे मोस्टली फॉलोड जोरोस्ट्रियनिज्म एंड स्ट्रॉन्ग कल्चरल सिमिलरिटी विथ साकास. Saint Thomas came to India for the propagation of Christianity during the reign of Gondopharenus. गंडोफेरनस रूलर थिले पार्थियंस रो एठी जगह से एते सीरियसली हम पढुन काहे ये इंडो पार्थियंस एही रीजन थिले इंडिया रा सम पार्ट ऑफ रीजन प्रेजेंट इंडिया रा बहुत कम पार्ट साका इंडो शियासियन भी मध्य कहा जाए शियासियन भी मध्य कहा जाए साका को फ्रॉम वेस्टर्न फर्स्ट साका किंग वाज मौस एंड मोगा who is known from inscription and series of coin. Mathura, Ujjain, Girnar were center of Saka ruler in North India. They ruled in capacity of satraps, that is governor and mahasatraps. With control over the western language, Ganga village, part of central India, Gujarat, Saka were almost always at war with Satavahanas and put pressure over Deccan region. सातवाहना यांको सहित बेसिकली लॉगर हेड थांती कॉन्फ्लिक्ट था यांको सहित रुद्रदमन तांकर सबुठु बड़ रूलर थांती साकार
इंडोसियासियन यार साका एमाने किछि पार्ट ऑफ इंडिया को आस्ते जो साका कैपिटल तंकर तक्षशिला थिला मथुरा थिला ए मथुरा रे बेसिकली यांकर जो डेवलप हेची तुमर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ओके रुद्रदमन कथा कहली रुद्रदमन रो बहुत इंपोर्टेंट कथा है कि सुदर्शन लेक रिपेयर करथिले जे कि चंद्रगुप्त मौर्य बनैथिले सुदर्शन लेक कथा मन रखिथिबो तुमर एग्जाम रो ये आसे देन लास्ट है कुशाना इंडो ग्रीक साकास एंड कुशाना So Kushanas or Yusis, who were from China, they ruled in northwest India with Puruspur, Peshawar as their capital. Kanishka, Mahayana Buddhist thile, was the most important ruler thile tangro. Kushana ra Kanishka, Uima Kadfis, Hubishka and Vaisheshika, ye mane au kichi ruler thile, but sabuto important ruler thile Kanishka. कनिष्का समय मन अच्छी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होता कश्मीर रे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल अश्वघोष वाइस प्रेसिडेंट थे महायाना बुद्धिस्ट काउंसिल रे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होता कुंडलवन बिहार रे सॉरी कश्मीर रे विथ वासुमित्र एज द प्रेसिडेंट वासुमित्र प्रेसिडेंट थे और अश्वघोष वाइस प्रेसिडेंट थे दी जन थे बुद्धा चरित that is biography of Buddha was composed by Ashwaghosa of Patliputra. So नागार्जुन पाखरु समाव एठी इन्फ्लुएंस हितले नागार्जुन को कहा जाए आइनस्टाइन ऑफ इंडिया Nagarjuna is also known as Einstein of India. He propounded the Madhyamika philosophy of Mahayana Buddhism. ये एरिया जो देखीच ये कुशाना एरिया कैपिटल थिला मथुरा यांको समय सबुठु माने बेसी जदी एक्सप्लोर हेची माने मथुरा स्कूल
ये देखो कुशाना एम्पायर माइंड रो पिक्चर रखिले तुम भले से मन रहिबो माइंड रो पिक्चर रखिले तुम भले से मन रहिबो सो दीज आर कुशाना एम्पायर ये सब आमे देखिले कनिष्का सो कनिष्का ही फाउंड करथिले 78 एडी रे साका इरा बाय कनिष्का एटा मन रखिबो सिल्क रूट को रूल करथिले कुशाना ग्रेटली बेनिफिटेड फ्रॉम इट दे इशू द गोल्ड स्टैंडर्ड कॉइन 22 रु 23 कैरेट ये गोल्ड स्टैंडर्ड कॉइन इशू करथिले मते एते इजी नथिला सेते प्योरिटी रो पाइबा सही समय रे एते इजी नथिला ओके सो प्रोसेसिंग ऑफ इंपोर्टेंट चाइनीज रॉ सिल्क ये प्रोसेसिंग होता है एट बहरूच इन गुजरात एंड हेल्प यू टू बिकमिंग एन इंपोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर ग्रेट योर सेडल इन हॉर्स राइडिंग जो घोड़ देकी उठती नहीं हॉर्स को सहीटा आर्मर टर्बान ट्राउजर हेलमेट्स लॉन्ग कोट्स एंड बेटर काभालरी आर द कुशाना कंट्रीब्यूशन थिला इंट्रोड्यूस सत्रप सिस्टम जोटे कि प्रोविंसेस सत्रप्स बेसिकली कौन एम्पायर को डिवाइड कले सत्रपीज अंडर सत्रप्स बेसिकली गोटे एम्पायर को प्रोविंसेस को कहा जाए सत्रप्स दिस इज वेरी इंपोर्टेंट वन ये भी यही इंट्रोड्यूस करथिले साका इरा ये इंट्रोड्यूस करथिले फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल यांक समय रहितला अश्वघोष एंड वासुमित्र ओके मु कहली कि यांक समय गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट मु खाली अल्प अल्प टिके देखि दउची दीज आर आर्ट एंड आर्किटेक्चर वेरी इंपोर्टेंट गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट रे ग्रीक और हेलेनिस्टिक स्कल्पचर रो इन्फ्लुएंस अछि सेथि पई इंडो ग्रीक आर्ट भी मध्य याको कोआ जाय सेथि पई इंडो ग्रीक आर्ट भी मध्य कोआ जाय गांधारा स्कूल यूज्ड ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन मड एंड स्टुको भी पर यूज करा होतला ग्रीको रोमन पैंथियन जो मेनली बुद्धिस्ट इमेजरी इन्फ्लुएंस बाय ग्रीको रोमन पैंथियन यूज करथे ये कुशाना पैट्रोनाइज करथिले गांधारा स्कूल भी इंडो ग्रीक्स भी करथिले कुशाना भी करथिले डेवलप्ड इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इन द मॉडर्न एरिया ऑफ कांदाहार रीजन ये गांधारा आर्ट बुद्धा सोन इज स्पिरिचुअल स्टेट एंड वेवी हेयर देखो वेवी हेयर एंड वेयर फ्यूअर ऑर्नामेंट्स एंड इज सीटेड इन ए योगी पोजीशन ये छिड़ा आइछन योगी पोजीशन थिबे the eyes are half closed as in meditation okay then mathura ये मथुरा बुद्धा इंडिजिनसली डेवलप होइतला नॉट इन्फ्लुएंस बाय एक्सटर्नल कल्चर यूजिंग रेड सैंडस्टोन ये रेड सैंडस्टोन यूज होइतला ऑल थ्री रिलीजन सेठी केवल बुद्धिस्ट रिलीजन थिला गांधारा एठी ऑल थ्री रिलीजन पाइबो एट द टाइम गोटेला हिंदुइज्म जैनिज्म एंड बुद्धिज्म was patronized by Kushana rulers. This is very important. Religious tolerance देखा देउथला. It was developed and in around Mathura, Sonk and Konkalitla. Konkalitla was famous for join monks. Buddha delighted mode रे smiling mode रे देखा होता है. So these are तुम्हारा थिला आजी पई. So I hope सबू important factors हमें जानिले. So post-Mauryan age एथिरे गोटेला इंडिजिनस रूलर किछि इंडिजिनस आ गोटेला फॉरेन रूलर इंडिजिनस रूलर है सुंगा कान्वा सातवाहना सेदी डायनेस्टी ये सब इंडिजिनस रूलर थिले
देन फॉरेन रूलर है इंडो ग्रीक्स, साकास, पार्थियंस, कुशानास, ये सब रूलर थिले। पोस्ट मौर्यन ने जो टाइम कहाँ से कहाँ, ମୁଁ କହିଥିଲି 185 BC ରୁ 300 AD। ओके, सो थैंक यू गाइस। आई होप जी भी क्लास देखिबो तुमको लागिबो कि बहुत सारा इनफॉरमेशन तुमे पाइजो। मो टिके मोर थ्रोट टिके प्रॉब्लम अछि, सेथि पे मो टिके भलो से इंटरेस्टिंग करि पारुनी, बट इनफॉरमेशन बहुत सारा अछि। एग्जाम ओरिएंटेड तुमे पाठ पढियार जदी मतलब थिबो जार सी भलो पाठ पढि कि जीवो। जी खाली हुहल्ला करियार अछि सी ताकू भल लागि न पारे, बट जी रियली बुझिवार अछि, जी रियली ताकू पाठ पढियार अछि सी भल से पढि कि जीवो। सो वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, वेरी इंपोर्टेंट सेशन एंड वेरी माने एई फेजेस टा वेरी डिफिकल्ट था पिलानकु कि गुप्ता फेज पूर्वरु आउ मौर्यन फेज परे केमिति पढिबा। सो एई फेजेस टा को तुमे माने मोडे आर्टिकुलेट कर देली कि कोन कोन रूलर अछंती, केमिति केमिति अछंती, एवं सेई समय कोन कोन इवेंट हेतिला जोंटा एग्जाम ओरिएंटेड चाहे एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे तुम काम रे आसी जीवो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू। Thank you for watching. God bless you all. Jai Jagannath. Namaskar.